जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी साइंस टीचर डॉक्टर प्रीति मित्तल। लाइफ चैप्टर में अब तक हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करे थे, बट दे वर ऑल फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। हमने सारे कंसेप्ट्स भी समझ लिए हैं, ट्री डायग्राम्स भी प्रैक्टिस कर लिए हैं, and I have told you the tricks also. I have uploaded short videos also for remembering Cartesian sign convention, mirror formula, lens formula, and about magnification. So अगर आप उन सब कंसेप्ट से क्लियर नहीं है, अगर आपकी री डायग्राम्स अभी क्लियर नहीं है, तो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने से पहले आई वुड एडवाइज यू आपकी री डायग्राम्स अब बहुत स्ट्रॉन्ग कर ले। अगर आपके री डायग्राम स्ट्रॉन्ग है तो आपका कार्टेशियन साइन कन्वेंशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन, उस सब में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद सम एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस। हम इजी न्यूमेरिकल्स से स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे अपना डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करेंगे, जिससे आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड easily you all will be able to work out the numericals. One advice from my side is that just have a look at the question, try to solve it out by yourself, and then आप चेक करें कि क्या आपका सॉल्व करने का तरीका और आपका आंसर सही है या you need to improvise. Okay, so I promise you all, अगर आप मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस करते हैं तो आप भी लाइट चैप्टर को और लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाएंगे. You will not have any fear of physics from now onwards. एक बात और है बच्चों कि सारे फॉर्मूला लर्न कर ले and then start doing the numericals. So let's start with our first question. I'm reading it out for yourself, for you. Just have a look. A person is standing 6 meters in front of a plane mirror. Find the distance between the person and his image. So it's a very easy question. You have a plane mirror and an object is at 6-meter distance from the plane mirror. You are asked कि what is the distance between the object and the image. तो प्लेन मिरर में आपको पता है अगर ऑब्जेक्ट 6 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर है तो इमेज 6 मीटर पीछे बनेगी एंड इट्स ऑफ द सेम साइज की इमेज 6 मीटर पीछे बनेगी मिरर के. सो डिस्टेंस आपसे ये नहीं पूछा कि मिरर से इमेज का क्या डिस्टेंस है. व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन इज डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज. So remember that the distance between the object and the image would be 6 plus 6 and that is 12 meter. So the answer for this question is 12 meter. I hope you have got the correct answer. Now move on to the second question. So the second question says that in the following figure, find out the angle of reflection. So it's a plane mirror here. This is the incident ray, this is the reflected ray, and you are asked to find out the angle of reflection. So you all know that angle of incidence is equals to angle of reflection. But what is the angle of incidence here? The angle of incidence is defined as the angle between the incident ray and the normal. And incident ray and normal के बीच का जो angle है, that is this one. And this angle would be 90 degree minus 50 degree. So angle of incidence is equals to 90 degree minus 50 degree and that will be equal to 40 degree. So the angle of reflection would also be 40 degree. It's an easy question, but it might trick you. Okay, so now moving on to the third question. Now let's practice the third question. An object is placed at a distance of 10 centimeter from a concave mirror of focal length 8 centimeter. Find the position and nature of the image and also draw a ray diagram for the same. So now let's do the question. So it's given the question that object is placed at a distance of 10 centimeter. Always remember that whatever could be the mirror or lens, object is always kept on the left hand side, and according to Cartesian sign convention, object distance should be taken as negative. It's given that the mirror is a concave mirror. Remember, caves में बहुत negativity है बच्चों, तो caves हमेशा negative है, means focal length of concave mirror will be negative. This is true for concave mirror and concave lens. तो caves में negativity है, ये याद रख लो, याद रहेगा कि focal length of concave mirror as well as concave lens is negative. Okay, now you have to find out the position of the image. Since it's a mirror, so we'll solve it out using mirror formula. One upon f is equals to 1 upon v plus 1 upon u. So 1 upon minus 8
is equals to 1 upon V minus 1 upon 10. Now we have to find out V, and V is positive only, so we'll let it be on the same side only. So 1 upon V is equal to, we'll shift this 1 upon 10 to the opposite side. So it's minus here, it will become positive. So minus 1 upon 8 plus 1 upon 10 will be equal to 1 upon V. Now, solving it out, 8 and 10, we have to find out the LCM. So LCM is going to be 40, but let me show you how to find the LCM. So it's 8 and 10. So in which table they both will be there? So in a table of 2, 2 4s are 8, 2 5s are 10. Just multiply all the three digits, because now there is no common number by which both of them could be divided. तो बस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे and that would be our LCM. तो LCM हो जाएगा 40. 8 की टेबल में 40 आता है 5 टाइम्स में, so it's -5 plus 10 की टेबल में 4 टाइम्स में, so +4, that makes us -1 upon 40 is equal to 1 upon V. तो 1 upon V की वैल्यू आ जाती है -1 upon 40, and so V will be equal to -40 centimeter. V की वैल्यू होगी -40 centimeter. This is the value of V. So we are asked to find out the position of the image. So position of the image is -40 centimeter. Now हमसे पूछा है nature of the image. बच्चों जब भी nature of the image पूछा जाए तो always calculate the magnification, and then उस magnification की value की basis पे हम interpret कर सकते हैं कि image का nature कैसा है. So let's do that. Magnification for mirrors is equal to -b upon u. So putting the values, minus sign of the formula, then -40 upon u, value of u is -10. Okay, one of the minus will be cancelled, but still one minus is there, so it will become minus, and zeros will be cancelled out, so it will become -4. So the magnification comes out to be -4. जब भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू में नेगेटिव साइन आए तो दैट शोज कि इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड. एंड जब भी मैग्निफिकेशन का वैल्यू मोर देन 1 है तो मींस द इमेज इज एनलार्ज्ड. तो इमेज कैसी बनी है, एनलार्ज्ड इमेज बनी है. आप बोलोगे कि मैम -4 तो 1 से छोटा होता है, तो -4 नहीं, हमें नेगेटिव साइन को अलग से इंटरप्रेट करना है. नेगेटिव साइन बस ये शो करता है कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, और ये नंबर 4 को अलग से इंटरप्रेट करना होगा, इसका मतलब अलग से निकालेंगे. एंड 4 नंबर शोज इट्स मोर देन 1. तो जब भी आंसर मोर देन 1 हो मैग्निफिकेशन का, तो दैट मीन्स दैट द इमेज फॉर्म्ड इज एनलार्ज्ड इमेज. ओके, सो वी हैव डन विद द न्यूमेरिकल. Now I'll just shift aside so that you can take a screenshot of the solution if you want, and then we'll be drawing a ray diagram for the same question. I hope you have taken a screenshot. Now let's draw the ray diagram. So it's a concave mirror. So we have to draw a concave mirror. Whenever you are drawing any mirror, just don't forget to draw these lines, because that shows that that surface is polished. अगर ये आप polished surface नहीं show करते तो ये आपका mirror की तरह behave ही नहीं करेगा. That is just a piece of glass. Now this is the principal axis, this is the focus point, this is center of curvature. In the question, this is pole. It's given that the focal length is 8 centimeter. अगर focal length 8 है तो center of curvature would be 16 centimeter. अगर 16 है और हमारा ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर पे, मींस ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. आपको ये मेजरमेंट्स मेजर करके यूज करने की जरूरत नहीं है. आप रफली अगर इसको 3 सेंटीमीटर लेते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल मेजर कर सकते हैं. ओके, नाउ one ray of light that is coming parallel to the principal axis after reflection will pass through the focus. Another ray of light passing to the center of curvature. मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम डायरेक्शन में जाएगी, और and the point of intersection of the two light rays would be the point where the image will be formed. So image is formed beyond center of curvature, and true also हमारी image बनी थी 40 centimeter on the left side. Left side कैसे पता? Because it is negative. तो 40 centimeter पे हमारी image form हुई है. ऑब्जेक्ट को लेबल करते हैं हम A, B से, तो इमेज को लेबल कर देंगे A dash and B dash से. ओके, सो वी हैव गॉट दैट. मैग्निफिकेशन का आंसर हमारा आया था -4, मीन्स हमें पता था दैट द इमेज वाज एनलार्ज, एंड इन द रे डायग्राम आल्सो द इमेज फॉर्म्ड इज एनलार्ज. Okay, I'll shift aside so you can take a screenshot if you want. Now moving on to question number 4.
An object is placed at a distance of 15 centimeter from a rear view mirror of focal length 10 centimeter. Find the position and nature of the image and also draw a ray diagram for the same. So now let's do the numerical. Now, it's given in the question that the object is at a distance of 15 centimeter. Why I have written minus 15? Because object is always kept on the left side. So, it's minus 15. Focal length. It's given, it's a rear view mirror. Rear view mirror is a convex mirror. So, remember, for convex mirror, the focal length is positive. We have to find out the position and nature of the image and draw the ray diagram. बच्चों एक बात का और ध्यान रखो, जो भी क्वेश्चन में पूछा है, जो भी आपको फाइंड आउट करना है, पहले से ही आप लिख लो. अदरवाइज एट एंड समटाइम्स इट हैपेंस कि बच्चे एक पार्ट करके ही क्वेश्चन को छोड़ देते हैं. दे जस्ट फॉरगेट अबाउट द नेक्स्ट पार्ट. So always make sure that you always write down the things which are given in the question. Okay. So now let's do the question. So using mirror formula, 1 upon f is equals to 1 upon v plus 1 upon u. Okay. 1 upon f, so it's 1 upon 10 is equal to 1 upon v minus 1 upon 15. Why I have written minus? Because this is a minus sign of u. Okay. v positive है, उसे उसकी side हम change नहीं करेंगे. So let it be at the same side. Then 1 upon 10. Now 1 upon 15 is here negative, so we'll shift it side. तो वो positive हो जाएगा. So 10 and 15 का LCM होता है 30. आई 10 and 15 हम बहुत बार वर्कआउट कर चुके हैं, तो आपको याद हो गया होगा कि इट्स LCM is 30. So LCM is 30. 10 3 times plus 5 की टेबल में 2 times, so it becomes 5 upon 30. That makes it 1 upon 6 is equals to 1 upon v. The value of 1 upon v is 1 upon 6. So the value of v is equals to 6 centimeter. ओके तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आया है, आना भी चाहिए था, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, मतलब राइट साइड में बनती है. ओके सो वी कम्स आउट टू बी 6 सेंटीमीटर. अब हमें फाइंड आउट करना है नेचर ऑफ द इमेज. तो वही नेचर ऑफ द इमेज फाइंड करने के लिए हम पहले फाइंड आउट करेंगे मैग्निफिकेशन एंड देन विल राइट डाउन कि इमेज का नेचर कैसा होगा. ओके तो मैग्निफिकेशन फॉर मिरर्स इज माइनस v बाय u. तो वैल्यू विल बी माइनस 6 अपॉन u की वैल्यू है माइनस 15. माइनस माइनस कैंसल्स आउट, सो इट बिकम 6 अपॉन 15. हम एक पॉइंट लगाते हैं 0 पॉइंट. ओके तो हमें एक 0 मिल जाएगा. इट विल बिकम 60 एंड 15 4 टाइम्स इज 60, so it will become 0.4. So magnification is 0.4. It's a positive sign and positive shows that the image is virtual and erect. क्योंकि magnification का आंसर पॉजिटिव आया, that means that the image formed is virtual and erect. And since the value of magnification is less than 1, it's 0.4 ना, तो 0 point something जब भी magnification का आंसर आए, मतलब image is diminished or smaller than the object. You can write diminished or you can write smaller than the object. Okay, so we have done the numerical part. Now we have to draw the ray diagram. So we have space here, so let's draw the ray diagram also. This is a convex mirror. Convex mirror में reflecting surface bulged outwards रहता है. ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर को ही डाइवर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं क्वेश्चन में, या फिर रेयर व्यू मिरर भी कह सकते हैं. सो रेयर व्यू मिरर, डाइवर्जिंग मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, ऑल द थ्री मीन्स द सेम ओनली. नाउ object is placed at a distance of 15 centimeter. So place your object here and mark this distance as 15 centimeter from the pole. It's given focal length is 10. Remember, convex mirror में focal length, center of curvature, they both are on the right hand side. तो focal length mark कर देते हैं 10 centimeter, center of curvature mark करते हैं 20 centimeter पे. So focal length mark कर देते हैं 10 centimeter and center of curvature mark करते हैं 20 centimeter पे. Now it's a convex mirror, तो वही दो rules. One of the ray of light coming parallel to the principal axis, reflection के बाद diverge हो जाएगी, पीछे trace back करेंगे तो appears to be coming from focus. Another ray of light was approaching towards center of curvature. अगर सीधी आती तो center of curvature तक आ जाती, but mirror से reflect होने के बाद it will retrace its path. तो जहाँ पर ये दो reflected rays एक दूसरे से meet कर रही हैं,
वहीं पे फॉर्म हो रही है इमेज. So image is that if the object is AB, mark your image as A dash, B dash. Image is formed on the right hand side, तो image distance positive आना चाहिए था. हमारा image distance positive है, means हमारा आंसर correct है. Image is formed between pole and focus, तो आंसर हमारा 10 से कम आना चाहिए था, and we have got the answer as 6, तो ये पार्ट भी हमारा correct है. Magnification is less than 1 means image ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी बननी चाहिए थी और हमारी इमेज भी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी है. ओके, तो हमारा रे डायग्राम ये प्रूव करता है कि हमने न्यूमेरिकल करा है बिल्कुल सही. With every question, I ask you to practice a ray diagram just for this reason only. क्योंकि अगर आप रे डायग्राम प्रैक्टिस करते हैं और उसको इंटरप्रेट करना धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप हर एक न्यूमेरिकल को खुद चेक कर पा सकते हैं कि आपका आंसर सही आया है या गलत. ओके, so I'll now just shift aside. You can take a screenshot if you want. Now moving on to the next question. But before that, I would like to say, I hope you are also enjoying to do the numericals with me. I just love to do the numericals and I just dream of the day when my students also just love to do the numericals. If you like the explanation, if you are able to understand the explanation, then do share it with your friends so that you can help me out with spreading knowledge. Now, let's move on to the next numerical. Calculate the speed of light in diamond if refractive index of diamond is 2.5. So in this video, we are going to practice all sorts of numericals related to all different topics of light chapter. So this question is from refractive index topic, and you know that refractive index of a medium like diamond, when it's given that refractive index of diamond is 2.5, that means refractive index of diamond with respect to air means absolute refractive index of diamond is 2.5. Now you know that refractive index of diamond with respect to air is equal to speed of light in air upon speed of light in diamond. You are asked to find out the speed of light in diamond. So let's put the values. Refractive index of diamond is given to be 2.5. It's just given to make your calculations easy. Actual value of refractive index of diamond is 2.42. So you need not memorize these values. That will always be given in the question only. So 2.5 is there. Now C is 3 into 10 to the power 8. That is the speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Don't ever forget that value might not be given in the question. So you have to remember the value that speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second. You have to find out the velocity of light in diamond. So it's very easy. Just cross multiply that. So we'll get velocity of light in diamond is equal to 3 into 10 to the power 8 divided by 2.5. When we divide that, we get 3 divided by 2.5. To remove this decimal, I'll just make it 30 divided by 25 into 10 to the power 8, and that will make it 6. That's 1.2 into 10 to the power 8 meter per second. Don't forget to write the units. Units are very important. So it's speed of light, so that would be in meter per second. Okay, so I hope this question was very easy. I'll just shift aside so that you can take a screenshot. Now the next question, calculate the refractive index of glass if the speed of light in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second. So now let's do that. It's given the speed of light in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second. You have to calculate the refractive index of glass. Okay, so you know the formula. Refractive index of glass with respect to air is equal to speed of light in air upon speed of light in glass. You know the value of C is 3 into 10 to the power 8 meter per second and divided by 2 into 10 to the power 8 meter per second. Meter per second and meter per second will be cancelled out. Similarly, 10 to the power 8 gets cancelled out. Just it's 3 divided by 2, that is 1.5. So refractive index of glass is equal to 1.5. That would not be having any unit because its refractive index and meter per second दोनों cancel हो चुके हैं, तो इसलिए refractive index की कोई unit नहीं होती. Okay, I'll just again shift aside so that you can take a screenshot. Moving on to the next question. Question number 7. An object is placed 60 centimeter away from a converging lens. Converging lens means convex lens. Of focal length 20 centimeter. Find the position and nature of the image, and as usual, draw a ray diagram to show the same. So now let's do the solution. It's given that object is placed at a distance of 60 centimeter. Focal length is 20 centimeter.
Why plus 20? Because it's a converging lens, means a convex lens. And for a convex lens, the focal length is positive. You have to find out the image distance and the magnification. So using lens formula, because now we have a lens, so we'll write using lens formula 1 upon f is equals to 1 upon v minus 1 upon u. रिमेंबर बच्चों, छोटी क्लासेस में पहले एडिशन पढ़ा था, 10th स्टैंडर्ड में पहले मिरर्स पढ़ते हो और इसलिए मिरर फॉर्मूला में है पॉजिटिव साइन। ऐसे ही बाद में आपने पढ़ा था सब्सट्रैक्शन, लेंसेज भी 10th क्लास में बाद में पढ़ते हो, तो रिमेंबर in the lens formula also there is subtraction. I'm just telling you a way to remember the formula. Now, putting the values, 1 upon 20 is equal to 1 upon v minus of 1 upon 60. Okay, so 1 upon 20 is equals to 1 upon v plus 1 upon 60. I hope यहाँ तक clear है। वही हमारा तरीका, v पॉजिटिव है, इसका साइड हम शिफ्ट नहीं करेंगे, we'll shift the other things. So it's 1 upon 20 minus 1 upon 60. 20 और 60 का एलसीएम होता है 60. 20 की टेबल में 3 times minus 60 की टेबल में 1 time, so it becomes 2 upon 60. That makes it 1 upon 30 is 1 upon v. तो v की वैल्यू आ जाती है 30 सेंटीमीटर. Value of v is 30 centimeter. Now you are asked to calculate the nature of the image. So nature of the image find out करने के लिए वही हमारा तरीका, finding the magnification. Magnification for lenses is v by u. मिरर्स के फिर से अपोजिट है ये, तो v by u. v की वैल्यू है 30, u की वैल्यू है minus 60, so it becomes minus 1 upon 2 and that is equals to minus of 0.5. ओके, मैग्निफिकेशन का भी कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर है, नीचे भी सेंटीमीटर है, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये नेगेटिव साइन शो करता है कि इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड पॉइंट में आंसर आया है, जब भी आंसर डेसिमल्स में आए मींस आपकी इमेज है डिमिनिश्ड, सो द इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड। Now let's draw the ray diagram for the same. I hope we have the space and we'll be able to draw the diagram here only. We need not erase a numerical for that. So it was a converging lens, means a convex lens. ये हमारा principal axis. This is optical center, f1, 2f1, f2 and 2f2. बच्चों रे डायग्राम अपने आप बनेंगे, बस ये जो डिस्टेंसेस हैं ये मेजर करके लेना। अगर आपने ऑप्टिकल सेंटर और f1 का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर लिया है तो f1 एंड 2f1 के बीच का डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर और f2 के बीच का डिस्टेंस भी 3 एंड f2 एंड 2f2 के बीच का डिस्टेंस भी 3. If you take proper measurements for doing these calculations, then you will never end up with incorrect answers. Okay, now ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, फोकल लेंथ है 20, तो फोकल लेंथ को मार्क कर देते हैं 20 सेंटीमीटर, बोथ द साइड्स इट विल बी 20 ओनली. नाउ ऑब्जेक्ट इज एट 60 सेंटीमीटर, अगर फोकल लेंथ 20 है तो 2f1 डेफिनेटली इसका डबल होगा, दैट इज 40, और हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस करा है बियॉन्ड 2f1 मींस 60 सेंटीमीटर पे. ओके, 60 सेंटीमीटर को शो करने के लिए हम उसे रखेंगे बियॉन्ड 2f1. फिर वही दो रूल्स, वन ऑफ द रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद पास होगी f2 से, second ray of light passing to the optical center, we'll be drawing that. Okay, wherever the two rays intersect with each other, that is the position of the image. बच्चों एक बात और ध्यान रखना, जब भी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, मतलब दोनों लाइट की जो रेज हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो आप इमेज का जो एरो बनाएंगे दैट शुड बी पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स. दैट शोज कि इमेज रियल इन्वर्टेड है, दैट द इमेज इज upside down. Okay, mark your object as AB and image as A dash, B dash. Whenever you draw the ray diagrams, remember आप ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों को ही लेबल करें. ओके, सो लेट्स चेक हमारा आंसर सही है या नहीं. हमारा आंसर आना चाहिए था समवेयर बिटवीन 20 एंड 40, क्योंकि f1 का डिस्टेंस है 20 और 2f2 का डिस्टेंस है 40, तो दोनों के बीच में इमेज बनी है, मतलब हमारा आंसर आना चाहिए था पॉजिटिव बिकॉज ऑन द राइट साइड एंड somewhere between 20 to 40, तो हमारा आंसर आया है 30, दैट इज करेक्ट. इमेज बननी है छोटी, इसलिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू आई है लेस देन 1 एंड नेगेटिव वैल्यू आई है, दैट शोज द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. और हाँ, हमारी इमेज बनी भी है रियल एंड इन्वर्टेड. ओके, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आई विल जस्ट शिफ्ट असाइड.
Now moving on to the next question, number 8. A concave lens of focal length 10 cm forms an image at a distance of 5 cm from the lens. Find the position of the object and size of the image if the height of the object is 6 cm. Now let's do the solution. So it's a concave lens. Remember, concave lens is a very negative lens. उसका सब कुछ negative है. Object distance negative, image distance negative, focal length भी negative. Everything is negative in a concave lens. So focal length should be -10. Image is given at a distance of 5 centimeter. You have to remember that it is always formed on the left hand side only. तो इसलिए image distance भी हो जाएगा उसका negative. You have to calculate the object distance and आपसे पूछा है height of the image. जब height of the object is given to be 6 centimeter. Now let's start to do the question. So we will use lens formula. One upon f is equals to 1 upon v minus 1 upon u. Value of focal length is 10, v is 5 and u is, we have to find out, and u is not given, so you have to find it out. Okay, now 1 upon we have to find it u, it's negative here, so we'll shift to opposite side ताकि ये value हो जाए हमारी positive. So 1 upon u is equals to minus 1 upon 5, minus 1 upon 10 shifted to opposite side will become positive, so it will be 1 upon 10. I hope यहाँ तक clear है आप सबको. 5 और 10 का LCM होता है 10. 5 की टेबल में 2 times, 10 की टेबल में obviously 1 times, so it becomes minus 1 upon 10. That is the value of 1 upon u. तो u की वैल्यू आ जाती है -10 सेंटीमीटर. नेगेटिव आंसर आना बिल्कुल सही है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड होता है. तो जब भी आपसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा जाए, याद रखना आपका आंसर नेगेटिव ही आना चाहिए. अगर आपका आंसर नेगेटिव नहीं आ रहा तो जस्ट थिंक ओवर इट, आपका आंसर कुछ ना कुछ गलत है. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द इमेज. अब हमसे नेचर नहीं पूछा है, हमसे पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज. सो यू नो दैट height of the image upon height of object is equal to, it's a lens, so minus that is equal to v upon u. Mirrors में minus v by u होता है और lenses में magnification की value hi upon ho होती है, that is height of image upon height of object, and that is also equal to v upon u. Now putting the values, height of image हमें calculate करनी है. Height of object is given 6 centimeter. ये positive ही होगा क्योंकि object को हमेशा principal axis के ऊपर ही रखते हैं. Now v की value आई है हमारी -5 given in the question. u की value आई है हमारी -10. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. हाइट ऑफ इमेज ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दैट बिकम्स 1 upon 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू, ये 6 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3 सेंटीमीटर. तो हमारी इमेज बनेगी छोटी. ओके, एंड कॉन्केव लेंस में हमेशा ही इमेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है. हमेशा इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इन केस ऑफ अ कॉन्केव लेंस. तो बच्चों हमारा आंसर है लेस देन द ऑब्जेक्ट साइज. हाइट ऑफ द इमेज छोटी आई है, ऑब्जेक्ट था 6 सेंटीमीटर का, हाइट ऑफ इमेज इज 3 सेंटीमीटर, मतलब इमेज छोटी बनी है. पॉजिटिव आंसर आया है, दैट मीन्स इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो हमसे पूछा नहीं है नेचर, बट अगर पूछते तो हम हाइट ऑफ द इमेज के बेसिस पे वो भी फॉर्म बता सकते हैं. ओके, नाउ आई जस्ट शिफ्ट aside so that you can take a screenshot if you want. Now moving on to the second last question of this video, that is, calculate the power of a diverging lens having a focal length of 20 centimeter. So it's given in the question that the lens is a diverging lens. Diverging lens means it's a concave lens and the focal length is 20 centimeter. But remember, concave lens focal length is always negative. Now using the formula of power, power is equals to 1 upon f in meters, or that could be written as 100 upon f in centimeter. Okay, 1 upon f in meters or 100 upon f in centimeter. Now putting the values, 100 upon 20, because the value is in centimeter with a negative sign, that will make it 5 diopter. So the power of the lens is negative and that is minus 5 diopter. Remember, concave lens का focal length भी negative होता है और इसलिए हमेशा power की value भी negative होती है. Okay, now I'll shift to side so that you can take a screenshot. Now finally reaching to the last question of this video. But in this video, we have completed
the medium difficulty level. Okay, the more difficult, if you want to practice more difficult questions, then we'll just be doing that in the next video. Okay, so last question of this video: find the power of a lens which converges the light rays coming from infinity to a screen placed at a distance of 25 centimeter from the lens. So it's given in the question that we have a lens, and when a parallel beam of light is coming on that lens, that is getting converged at a distance of 25 centimeter from the lens on a screen. जब भी स्क्रीन पे आपको इमेज बनती है, पैरेलल बीम को आपने प्रोजेक्ट करा किसी लेंस पर, और आपको इमेज फॉर्म हुई है स्क्रीन पर, मीन्स दैट इज अ कॉन्वेक्स लेंस. ओके, कॉन्वेक्स लेंस में ही इमेज स्क्रीन पे फॉर्म हो सकती है, क्योंकि वही एक रियल इन्वेटेड इमेज बना सकता है. कितने डिस्टेंस पे कन्वर्ज हो रही हैं? इट्स गिवन दैट दे आर कन्वर्जिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज होने का मतलब है उसका फोकल लेंथ जो है लेंस का, दैट इज 25 सेंटीमीटर. बच्चों बताओ, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, बिकॉज इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल पॉइंट होता है राइट साइड में, और इसलिए फोकल लेंथ की वैल्यू होगी पॉजिटिव. नाउ पावर फाइंड आउट करने के लिए वही फॉर्मूला 1/f इन मीटर्स और 100/f in centimeter. This is the formula. Putting the values, 100 upon focal length is 25, so it will come out to be 4 diopter. So the answer for the power of this lens will be 4 diopter. Now I'll just shift aside so that you can take a screenshot if you want. So I hope you were able to work out all the numericals with me. Do let me know about your feedback. Your comments are really very important for me. So do let me, were you able to do all the numericals? Are the numericals now looking to be easier for you as well? So if you like the content, do share it with your friends and subscribe to my channel if you haven't already. That's all for this video, but stay tuned and we'll be returning with the next difficulty level of the numericals in the next video. That's all for today. Good day, everyone.